Come join me in welcoming our friend from across the border, Ali Zafar. Ali, welcome to the film industry, welcome to India, and welcome to the show. Thank you for having me. How are you? I am good, and I'm glad to see you again in a new avatar. पिछली बार आपसे मुलाकात हुई थी जब आप Prince of Pop थे. अभी भी है? I don't know, कह सकते हैं, कहते हैं कुछ लोग, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत से Princes of Pop हैं. हाँ, नहीं, लेकिन I think हमारे लिए आप ही एक Prince of Pop हैं. I think आप जितने popular हैं as a singer in India, there's no other singer who's as popular as you, like in the field of pop. No, I think you have some very good and great लेकिन singers. हमारे जो देश में जो indie pop scene है वो almost खत्म हो चुका है. And somehow you guys have managed to keep it alive. I'm seeing that it's not very conducive to pop either, because pop albums or I think because of the piracy issue. उसके अलावा I think private albums चलती नहीं है क्योंकि हमारी तो हिंदी film industry का Or music Bollywood is so dominant and it's dominating, so that's So why. good now that you're entering Bollywood. Yeah, it's very exciting. आज मैं अमेरिका के पीछे भाग रहा हूँ, एक दिन पूरा अमेरिका मेरे पीछे भागेगा। So आपकी जो फिल्म है तेरे बिन लादिन, टाइटल सुनते ही जरा खतरनाक लगता है, and I believe आपका भी यही initial reaction था। शुरू में एक्चुअली फिल्म का नाम अनडिसाइडेड था, और इससे भी शायद थोड़ा खतरनाक क्या था? I don't remember actually, but Don't lie. it was something like I think I shot Osama or something like that. Shot as in shooting wise. Right. Shoot करना. And then I was like, no, I can't do the film with this name, and लोग पता नहीं क्या सोचेंगे कि क्या फिल्म है, किस बारे में है. And then we decided कि we'll mutually come up with a name which is neutral and इसमें कोई ऐसी बात ना हो. तो तेरे बिन लादेन I think it's जिसको भी बताते हैं तो जरा एक उसमें एक interesting क्यूरियोसिटी भी बिल्ड अप होती है, और एक फनी सा नाम एक तरह से है, उसमें एक हल्का सा एलिमेंट है ह्यूमर और विट का, जिस तरह की फिल्म में है. फिल्म में बल्कि हल्का नहीं, फिल्म में बहुत ज्यादा है, और फिल्म है ही ह्यूमरस और बहुत कॉमिकल और फनी. और रिसेंटली आपकी एक बहुत ही कॉमिकल और फनी फोटो निकली थी अखबारों में, जिसमें आप आई थिंक यू आर सिटिंग इन योर बॉक्सर्स एंड यू आर गैग्ड, एंड आपको लाइक बांध कर रखा हुआ है, एंड यू आर ऑन अ टॉयलेट सीट. क्यों ऐसा सीन है फिल्म में? उस तस्वीर को देख के लगता है कि पता नहीं क्या कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली वो ही इज बीइंग डिपोर्टेड. ऐसे? हाँ, तो नहीं, वो फिल्म में एक सीन है, बिकॉज जहाज से डिपोर्ट किया जाता है ना, तो उसे बांध के तो बाथरूम में डाल देते हैं. So Please tell me वाकई में ऐसा नहीं होता है. Actually रियल जिंदगी में तो obviously I don't know कि किसी के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन actually worse things have happened to people when they were being deported. ये तो खैर, so when you watch the film you'll see that entire situation and that scene when he's deported and sent back home. It's very funny because it's a funny take on things. Is the film a funny spoof on how पूरी दुनिया ढूंढ रही है उसामा बिन लादेन को, या how funny it is that they are so anti certain countries and certain people? I think it says a lot of things actually through its humor. Okay. एक तो ये कि मीडिया भी किस तरह चीजों को बहुत ज्यादा हवा दे के और एग्जैजरेट करके दिखाता है कई दफा, और हमारे यहाँ तो रोज. हाँ, दूसरे ये कि किस तरह फेयर इंड्यूस किया जाता है पब्लिक के अंदर रिगार्डिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, और एक सर्टेन बायस और एक परसेप्शन जो है वो प्रोपिगेट की जाती है, वो है. So this guy when he makes the fake Osama tape, the entire world goes into frenzy and they believe it actually. They would. So people actually, because whatever comes on media is believed. Yeah. हाँ, ऐसा ही होगा. ये तो सच है क्योंकि टीवी पर आया है. हाँ. Which is not actually true. So the film is also about that. And how come you thought of acting? Well, few people know that before I started singing, I had done some work for TV and as an actor. Hi, पाकिस्तानी डेली सोप एक्टर हैं आप? नहीं, सोप एक्टर नहीं था. अच्छा. सोप एक्टर बनने लगा था तो मैंने कहा कि नहीं, म्यूजिक मेरा पहला पैशन है तो मैं म्यूजिक करूंगा. एक्टिंग मैंने की just to get some pocket money to make my music videos and my album. Yeah. Because I didn't come from a rich background or family. आपके पेरेंट्स प्रोफेसर्स हैं? हाँ, yes, exactly. So वो मैंने इसलिए एक्टिंग थोड़ी कर ली. But I thought कि यार, I didn't want to really act on soaps and TV and all that. But I think so. I thought that if I would act, then it would be a feature film. And so this is that film. So I believe इस फिल्म में आप गाने भी गा रहे हैं? हाँ, I've sung 4 songs in the film. Oh. Yeah. And lovely titles like I Love America और मैं उल्लू का पट्टा हूँ. फिल्म में जो मेरा कैरेक्टर है, he is basically an उल्लू का पट्टा. Because वो जो चीजें करता है, जो हरकतें करता है अमेरिका जाने के लिए, वो उल्लू के पट्टों वाली होती है. तो when I came to the film, तो शंकर साहब रॉय
obviously knew of me and saw me and said कि यार अगर if he is doing it तो फिर इसको हम good looking लोग पता करते हैं because that'll suit the character more. हाँ. So that's how the song good looking लोग पता किया. गाने आपकी फिल्म में है. I'm guessing lip sync नहीं हो रहे और आप कहीं perform नहीं कर रहे. हाँ, I have sung my own songs myself. Very nice. Sing us a line of something. उल्लू दा पठा के आपको सुना देता हूँ एक. It's या मैं आ जगमग उल्लू दा पठा रोड़े डाले मर मन धक्के उल्लू दा पठा एनु मारा या खुद नू पीटा. Oh, he's a good looking ullu da patha. Oh, he's a good looking ullu da patha. In case you're wondering, हमारे पीछे जो पेंटिंग हम लोगों ने लगाई है, is because ये बहुत ही मल्टी टैलेंटेड है. प्रिंस ऑफ पॉप तो है ही, and already he's like becoming a superstar. पर आप एक पेंटर भी हैं, और वो भी qualified painter. हाँ जी, I graduated as a painter from the National College of Arts. Can you graduate as a painter? People usually assume painter बनना हो तो like सब पढ़ाई छोड़ दो and then just paint. आजकल के दौर में इतनी चीजें एक स्पेशलाइज्ड दुनिया हो गई ना. डिग्रीज हर चीज में मिलती हैं. अब मेरे ख्याल में अब तो खाना पकाने में भी डिग्री मिलती है in a lot of things. So yeah, you can actually graduate as a painter. I'm basically a singer. Okay. And now that the film has come out, I loved acting and enjoyed it so much. So I think I'm gonna focus a lot on acting. Painting मैं करता हूँ अपने लिए अपने free time. ऐसे लोगों को दिखाते हो कि नहीं? दिखा देता हूँ अगर अच्छी बन जाए तो. Great practice as a single boy. Are you single? No, I'm double. You're married. Yeah. अफसोस बहुत सारी लड़कियों का दिल इसी वक्त टूटा होगा. So lately the work that I've done, I think I've evolved as a musician and as a singer. And recently I did some sessions on the Coke Studio, which people can watch on YouTube, and that's more Sufi folk music. So in that you'll find a different side of my singing. I think they compared you to Kishore Kumar क्योंकि आवाज मिलती जुलती है. Yeah, that's what I'm मिलेगा आपको. So I think a singer needs to be versatile. तो आपने ट्रेनिंग ली है या बस? मैंने बेसिक ट्रेनिंग ली हुई है. शुरुआत में like you wanted to basically be a painter. So ये singing का जुनून कब? When I was growing up, initially I wanted to be a painter and Superman. When I grew up a little further, I want to be Imran Khan and a cricketer. Right. Then I grew up, and when I went to college, then I wanted to be a singer, Michael Jackson or like Kishore Kumar. Or then I grew up further, and I said, I'm loving the singing bit, and I'm a singer. I decided. But बीच में से कुछ acting का जो है वो एक कुछ दोस्त पुश कर देते थे डायरेक्टर्स के नहीं, you should act too, and you. तो वीडियोस में मैं कुछ रोल्स वगैरह करता रहा. And then this script came, so I heard the script and I thought, why not, yaar? Let's give it a try. So how did they think of you? Did you ask them कि आपने मेरे बारे में कैसे सोचा? Yeah, Abhishek Sharma, he had seen my music videos, and he said कि मुझे music video देख के पता लग गया था कि you're a very good actor. अच्छा. And then he searched for me. We had a common friend. We met up, and he narrated the script to me, and I loved it, and that's how it happened. Unbelievable. On the internet already, I think बहुत सारे views पोस्ट हो चुके हैं आपके एक्टिंग डेब्यू पर एंड एवरीबॉडी सेइंग हम तो सिर्फ अली के लिए देखेंगे ये फिल्म और इतनी नेचुरल है. हैव यू सीन ऑल ऑफ दैट? I still have to catch up on that. Yeah. So it's all positive. Yeah, but I do make it a point to, I have a Facebook fan page. I am on Twitter. I have my website elizafar.net. So I do make it a point. जब भी मुझे फारिग टाइम मिलता है, I go and read the comments and I reply to them and I keep updating my fans and all that. So I love interacting with the fans. And is it you or is it like a PR person जो reply कर रहा है आपके behalf No, पर? mostly it's me, but if I'm like traveling and working, like I haven't had time for the last 3-4 days to post or update anything. But then I call someone, my PR person, कि ये if you could update that. आपने बिल्कुल secrets बता दी हैं of like the industry के अक्सर या कभी कभार जब busy होते हैं stars तो कोई और लिखता है. Yeah, but they know that कि वो मैंने नहीं लिखा because my posts are very personalized. So I mean, my PR person wouldn't write कि having a great time at Juhu Beach. That is my thought, right? Right. So she would write कि my album is releasing tonight. That looks like a formal thing. Okay. So that's what we're supposed to look out for. अगर like कुछ like promotion हो रहा है अपने काम का मतलब किसी और ने लिखा है और जब हम मेरे पेट में दर्द है, that's you. Yeah, that's me. Yeah. Okay. All right. So have people approached you for more films? जी. अच्छा, already? As they say that it's under talks are going on. हाँ, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, हम commit नहीं कर सकते. Exactly.
So tell me more about Pakistan. आप लाहौर के हैं. कैसा है शहर? लाहौर एज से Which is what? Lahore is what? भाई लाहौर का इतना एक पुराना शहर है, तो उसका एक कल्चर, उसकी प्रेजेंस, उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी ओरिजिनलिटी, उसका खाना, उसके लोग, दे वेरी वेरी वेलकमिंग एंड हॉस्पिटेबल. आप अगर लाहौर आएंगे तो लोग बिक जाते हैं कि आपको किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ ना हो, और खाने खिलाते रहते हैं, आप ये भी खाएं, ये भी खाएं, क्या करना चाहिए. सो इट्स लाइक दैट. Are people in India like welcoming to you? Do you still get that like, oh, ये पाकिस्तान से हैं? Have you ever felt that? I won't lie, 98% I felt love and a very welcoming feeling है जैसे, but एक आध दफा हो जाता है, कोई ना कोई हो, एक आध इंडिविजुअल ऐसा हो भी जाता है. तो बहस होती है कभी? नहीं. देखिए, you have to understand humans on a very, एक ह्यूमन साइकी होती है हर किसी की, और ईगो होती है हर किसी की. You just have to understand and look through it. Man is born with a lot with ego, and the day you understand that, the day you drop all your shackles और ego को आप खत्म कर देते हैं, तो आप हमेशा हर वक्त बहुत खुश और मुतमईन होते हैं. Is it easy for somebody from Pakistan to get work here? Like I know playback singing तो फिर भी आसानी से हो जाती है, but as an actor. Well, I think not. I would say not as much, because a few people have been able to. Like you would have to move here. Yeah, because बहुत सी चीजें हैं ना. There's moving here, living here, interacting, visas and all these things. So I mean, things are not very conducive for both. हाँ, आसान तो नहीं बनाएंगे हम मतलब. So I just hope कि हो जाए, conducive हो जाए, आसान हो जाए दोनों मुल्कों के. So it's like now home for you is still Lahore. Yeah. और अगर आपके साथ लोग काम करना चाहते हैं, then उनको आप वहाँ पर मुझे आकर- देखिए, दुनिया में जहाँ भी काम मिलेगा मैं करूँगा. And Mumbai being so close, and the industry being one of the biggest in the world, actually perhaps now the biggest. Yeah, because सबसे ज़्यादा Yeah. फिल्में, like Yeah. हिंदी फिल्म, I Yeah. mean Indian film industry Yeah, बनाती so है. why not? All right.